friends, today I'm going to show you the function of green screen and how that works. So with green screen you can make your video at any place by placing green screen as a background, and then with the software you can add it and remove that green screen and you can place any background that you would like to see in your video. So right now you see the background, there's a wall and back stand, a black color and off-white color of wall. Now I'm gonna put the green screen and then we will go to my computer and I will show you how to remove the green screen from your video. आज मैं आपको ग्रीन स्क्रीन का फंक्शन दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में कि ग्रीन स्क्रीन कैसे वर्क करती है और हम ग्रीन स्क्रीन को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ग्रीन स्क्रीन का फ़ायदा क्या होता है कि आप ग्रीन स्क्रीन को अपनी वीडियो में आपके बैकग्राउंड में रखेंगे और उसके बाद आप अपनी वीडियो बनाएं। वीडियो बनाने के बाद उसको आपको सॉफ्टवेयर में जब आप उसको एडिट करेंगे तो ग्रीन स्क्रीन को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं और उसकी जगह पे आप कोई भी बैकग्राउंड रखना चाहें अपनी वीडियो में तो वो आप रख सकते हैं। तो चले, अभी आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में जो आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है वो ऑफ वाइट वॉल नज़र आ रही है और ब्लैक कलर का आपको एक स्टैंड नज़र आ रहा है। अब मैं ग्रीन स्क्रीन रखूँगा और उसके बाद आपको कंप्यूटर पे लेकर चलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ग्रीन स्क्रीन किस तरह से फंक्शन करती है। Now as you see that I have put this green screen behind, and then after making this video for a bit we're gonna go to my computer and then we're gonna change this green screen and we're gonna change the background. So let me take you to my computer. जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने ये ग्रीन स्क्रीन पीछे अब बैकग्राउंड में लगाई हुई है। जब भी ग्रीन स्क्रीन के साथ हमें वीडियो बनानी है तो इस तरह से हमने ग्रीन स्क्रीन अपना बैकग्राउंड बनाना है, उसको बैक पे रखना है और उसके बाद वीडियो बनाने के बाद हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इस ग्रीन बैकग्राउंड को चेंज करेंगे और जो भी हम बैकग्राउंड रखना चाहें हम अपना रख सकते हैं। तो चले, मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर पे और मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। इट्स वेरी ईजी। So let's go to my computer. Now you see my computer screen. The software that I'm using is Power Director 365. We are going to bring a file that has a green screen and we are going to practice to remove the green screen from that video and change the background. So here's a video with the green background. We will bring it down to the timeline because this is the same video that we have started today. So I'm going to trim and remove white background video and I'm just gonna leave the video portion which has a green screen because we are practicing to remove green screen. We will bring that down to timeline 2 because in the timeline 1 we are going to put our new background picture and I will drag this picture to the length of my video. Then we will right click to edit in PIP Designer. PIP Designer, whatever software you guys are using will have that, and we are using Chroma Key. So the main thing is Chroma Key, and then we will select the dropper to select the color. That's a dropper. We are gonna put that on green because we are removing green. And then we will make some adjustments so that the shadow behind me, the green shadow, is disappeared. Click OK
and our green screen is gone. Our background has been changed. I'm just making some adjustments, and I will click on randomly 2-3 places in my video to see if there's still some shadow, green shadow behind, and I see there's a shadow, so I'm gonna go back to PIP Designer again, and here I'm going to make some more adjustment, denoise function, and see how it is changing, and the remaining shadow has been disappeared as well. This is a picture that I have put as a background. We can add a video background instead of the picture. So I'm going to remove this picture and I'm going to bring a video background. So we are going to remove this. Now we are going to add a video background. So same way we are going to drag that and bring it to timeline 1, and let's play. Now our background has been changed to a video that we added. Now that video is a short video. You can add multiple videos or backgrounds, it's your choice. I'm bringing another one, and we are gonna play again. These adjustments, if you would like to do based on your background, either video or a picture, but not needed. So let's play that and see. Now our background has one video and then another one starts. मैं जो सॉफ्टवेयर एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ वो इस वक्त जो मैं यूज़ कर रहा हूँ पावर डायरेक्टर 365 है। अब इसमें हम अपनी ग्रीन स्क्रीन वाली फाइल को लेकर आएंगे। ये मैं वही फाइल यूज़ कर रहा हूँ जो आज की इस वीडियो में स्टार्ट से आप देख रहे हैं। अब इस वीडियो को सिलेक्ट करके हम उसको अपने सॉफ्टवेयर में ले आएंगे और उसके बाद उस वीडियो को हम ड्रैग करके नीचे टाइमलाइन में लेकर आ जाएंगे। ये मेरी जो सेटिंग थी वो डिफरेंट थी, सो एस्पेक्ट रेशियो मैंने चेंज कर दिया क्योंकि इस वीडियो में मेरे पास वाइट बैकग्राउंड और ग्रीन बैकग्राउंड है। तो क्योंकि हम लोग ग्रीन को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं इसको ट्रिम करके खाली जो आपका हमारा ये जो ग्रीन स्क्रीन वाली जो वीडियो है वो पोर्शन हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने इसको ट्रिम कर दिया। अब इसको टाइमलाइन 2 में लेकर आएंगे। वो इसलिए कि जो हमारा नया बैकग्राउंड है वो टाइमलाइन 1 में आएगा। क्योंकि ये एक पिक्चर है तो इसको मैं पिक्चर को ड्रैग करूँगा। जितनी भी मेरी वीडियो की लेंथ मैं चाहता हूँ कि उसका बैकग्राउंड चेंज करूँ, उसको आप ड्रैग करेंगे और उसके बाद आप जाएंगे वीडियो एडिटिंग में और PIP डिज़ाइनर को सिलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन आपके सॉफ्टवेयर में भी होगा। इसमें जो मेन चीज़ है वो क्रोम की है। तो आप अपने सॉफ्टवेयर में क्रोम की को फाइंड कीजिएगा, या तो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करें और उसके बाद ड्रॉपर को सिलेक्ट करें। ये ड्रॉपर हम अपने कलर पे रखेंगे, जो कलर हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारा ग्रीन कलर है, इस ड्रॉपर को लाकर हम ग्रीन पे रखेंगे और इसको हम एडजस्ट करेंगे ताकि बैकग्राउंड में जितना भी ग्रीन शेडो जो भी है वो ख़त्म हो जाए। और अब हम इसको ओके क्लिक करेंगे। अब हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया। ये मैं अपने हिसाब से माइनर सी इसमें एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, अगर ज़रूरत हो तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब इसको प्ले करते हैं और देखें। अच्छा, मैं इसको आप 1-2 जगह पे रैंडमली क्लिक करके देखूंगा कि पीछे मुझे और शेडो कहीं नज़र तो नहीं आ रहा ग्रीन का, और आप देखें इसमें नज़र आ रहा है। तो हम फिर से PIP डिज़ाइनर में जा रहे हैं
ताकि हम रिमेनिंग शेडो को भी रिमूव कर दें। तो इसमें इसी क्रोम की में ही हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं और देखें इसको मूव करने से कैसे ये हमारा शेडो गायब हो गया। ओके, नाउ जितने अभी हमारे वीडियो में शेडो रह गया था ग्रीन, वो ख़त्म हो गया और बैकग्राउंड हमारा चेंज हो गया ग्रीन से, जो हमने सेलेक्ट किया था, जो पिक्चर हमने सेलेक्ट की थी। अब हम वो पिक्चर देख रहे हैं बैकग्राउंड में। हम पिक्चर की जगह पे वीडियो भी रख सकते हैं। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और अब मैं बैकग्राउंड में एक वीडियो को लेकर आता हूँ। वही टाइमलाइन 1 में हम रखेंगे क्योंकि वो हमारा बैकग्राउंड टाइमलाइन 1 में जाएगा और इसको प्ले करते हैं। अब हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया है और वीडियो, बिकॉज ये जो हमने वीडियो बैकग्राउंड में रखी हुई है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की थी। आप मल्टीपल भी रख सकते हैं, जैसे मैं अभी दूसरी वीडियो को ड्रैग करके टाइमलाइन 1 में उसके साथ रख रहा हूँ। सॉरी, ये गलत ऑप्शन दब गया, सो आप इसमें नहीं जाएंगे। वापस आ जाते हैं हम लोग, वीडियो को प्ले करते हैं। ये माइनर सी एडजस्टमेंट अगर ज़रूरत हो वीडियो के हिसाब से तो आप करें, वरना कोई इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और अब हम इसको प्ले करते हैं। तो देखें, एक वीडियो के बाद हम दूसरी वीडियो जो बैकग्राउंड में हमने रखी हुई है वो स्टार्ट हो जाएगी और हमारी ग्रीन स्क्रीन चेंज हो गई। So now you have seen that how to change this background, green screen background with any other background that you would like to see in your video. Now this green screen has two options. One side is green and the other side is blue, so you can use either green or blue. I'm using green at this time for this tutorial. So if you have green screen or blue screen and you would like to learn how to fold that screen, then follow this link, and in this link I am going to teach you how to fold your screen. तो आपने देखा कि ग्रीन स्क्रीन के साथ वीडियो बनाने के बाद बैकग्राउंड चेंज करना कितना इजी होता है। मेरी इस ग्रीन स्क्रीन में दो ऑप्शंस हैं, एक ये ग्रीन जो आपको नज़र आ रहा है और इसके अलावा इसके बैक पे ब्लू कलर है। तो आप ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो के लिए। और इस तरह से जो मैंने अभी आपको सिखाया, इस तरह से आप अपना बैकग्राउंड कोई भी चेंज कर सकते हैं। तो ये ऊपर जो लिंक आपको नज़र आ रहा है, इस वीडियो में मैं आपको ये ग्रीन स्क्रीन को फोल्ड करने का तरीका समझा रहा हूँ। अगर आप ग्रीन स्क्रीन ले रहे हैं और इसको फोल्ड करने का तरीका आपको सीखना है तो आप इस वीडियो को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe to my channel and press the bell button.